Hello viewers, today I am going to tell you about why Indians should worry about the Telegram app. Security problem found in Telegram app. It is said by several people that hackers can reportedly extract your location from a feature in the Telegram Messenger app, which can help stalkers get your precise location. Independent researchers Ahmad Hassan claimed that the people nearby feature in Telegram can be exploited to harvest the exact location to track you. The stalkers are taking your एग्जैक्ट पोजीशन आपकी पोजीशन कहाँ आप रहते हो ये पता लग जाती है टेलीग्राम लेट्स यूजर क्रिएट लोकल ग्रुप्स विद इन अ जोग्राफिकल एरिया Hassan said that the scammers often spoof their location to crash such groups and then peddle fake Bitcoin investments. Hacking tools, stolen social security numbers, and other scams. So जो स्कैमर्स होते हैं वो आपकी लोकेशन को लेकर के आप ग्रुप को हैक क्रैश करके बिटकॉइन का इन्वेस्टमेंट करते हैं और हैकिंग टूल के थ्रू आपकी सिक्योरिटी को सोशल सिक्योरिटी को स्टील करते हैं चोरी कर लेते हैं दिस इज द स्कैम एंड स्पूफिंग most users don't understand they are sharing their location and perhaps their home address. And if female use the features to chat with the local group, she can be stalked by the unwanted user. This is good that the people nearby feature is turned off by default and it can be helpful feature when turned on. The features people nearby is a main cause of problem to get your आपकी लोकेशन को ले लेते हैं और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं यूजर इन पीपल नियर बाय सेक्शन इंटरनेशनली शेयर द लोकेशन दिस फीचर इज डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट इट एक्सपेक्टेड डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट लोकेशन इज पॉसिबल अंडर certain conditions. Unfortunately, this case is not covered by our bug bounty program. While Telegram claim it is not an issue, जबकि टेलीग्राम ही कहता है ऐसा कोई इशू नहीं है ये सारा फैलाया जा रहा है इट इज़ हाईली एडवाइजेबल टू टर्न ऑफ द फीचर्स when नॉट नीडेड आपको जब जिसकी फीचर्स की ज़रूरत नहीं आप उसको टर्न ऑफ कर दीजिए और जब चाहते हैं तब खोल दीजिए टू सेव योर टेलीग्राम group or address by the stalkers. Facebook is spreading lie about Telegram said by the CEO of Telegram. He claimed that the Facebook-owned WhatsApp has turned to convert marketing to fight the recent popularity of Telegram. At about 500 million users and growing, Telegram has become a major problem for Facebook Corporation, unable to compete with the Telegram quality and privacy. अब इनका सीईओ का कहना है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को इसलिए लिया क्योंकि वो टेलीग्राम से compete नहीं कर पा रहा था और अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए कंपटीशन को compete करने के लिए उसने ऐसा किया है और टेलीग्राम के खिलाफ बोल रहा है As per Durov, there are 3 myths that its competitors are against Telegram. ऐसी 3 मिथ्या है जिसके वजह से टेलीग्राम को कॉम्पिटिटर नहीं पसंद करते टेलीग्राम कोड इज नॉट ओपन सोर्स इट इज रियलिटी ऑल टेलीग्राम क्लाइंट्स एप्स हैव बीन ओपन सोर्स सिंस 2013 इट इज सेड बाय द सीईओ ऑफ टेलीग्राम कि ऐसा कुछ नहीं है कि टेलीग्राम ओपन सोर्स है इज नॉट अ ओपन सोर्स टेलीग्राम इज अ रशियन ऐसा कहना है कि रशियन प्रोग्राम है and in fact Telegram has no offices in Russia and was blocked there from 2018 to 2020. Durov also clarified another myth that Telegram is not encrypted. Every chat on Telegram has been encrypted since launch. We have secret chat that are end-to-end and cloud chat that also offer real-time secure and distributed cloud storage. Although Durov said all this, but we will get later whether it is encrypted or not. In the space of just 72 hours, Telegram recorded 25 million new users, pushing the total number of users above
500 million, Mr. Duro said on Tuesday. ट्यूसडे को उन्होंने कहा कि जैसे ही व्हाट्सएप ने पॉलिसी को लॉन्च किया वैसे ही हम 72 घंटे में टेलीग्राम में 25 मिलियन लोगों ने ज्वाइन किया. Since May last posed already, massive influx of new users to Telegram has only accelerated. We may be witnessing the largest digital migration in human history, Mr. Durov wrote in his Telegram channel on Thursday. ट्यूसडे को लोगों ने ज्वाइन किया और थर्सडे को उन्होंने लिखा. By removing the manipulative algorithm that have become synonymous with 2010 technology platform, Telegram's channels restore transparency and integrity to public one-to-many communication. एक से बहुत से लोगों पे कम्युनिकेशन को उन्होंने करा और अपनी एल्गोरिदम को सही करके उसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया और इंटीग्रिटी को बढ़ाया. We are honored that political leaders as well as numerous public organizations rely on Telegram to combat many misinformation and spread awareness about important issues in their society. Mr. Duro said. अब उन्होंने कहा कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग इसको यूज कर रहे हैं और इसके बारे में बोल रहे हैं. Telegram might face complete ban in India, but in India it might be banned. Report the encrypted server of the app are reportedly causing a problem for the authority. Although the Durov said that it is encrypted, but it is also still creating a problem for the authorities following the major backlash by Government of India on several social media apps due to the spread of fake news. Telegram messaging service now seems to be on the radar of authorities. Source revealed that the app might soon face a complete ban in countries citing security reasons, just like a Facebook-owned chat platform WhatsApp. Telegram uses an end-to-end encryption. It is in its working essentially providing complete privacy to its user. The flip side of it, however, is the fact that there is no check on the activity taking place on platform because of एनक्रिप्शन. ऐसा वो दुरोव कहते हैं, लेकिन इंडियंस ने फाइंड आउट किया कि एनक्रिप्शन प्रॉपर ना होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी नहीं है और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है. टेलीग्राम sought to fame globally because of its end-to-end encrypted server and the resulting privacy for its user base. However, now the app is being blamed for the harboring illegal practice within the user base because of the same encryption. अब लेकिन ये ब्लेम किया जा रहा है कि इनके एनक्रिप्शन में प्रॉब्लम है. What's more, authorities are unable to keep a check on these unlawful practice because of encryption. As per the CNBC Awaaz report, this is the prime reason why the app might be facing complete ban in India soon. So Telegram भी जल्दी ही इंडिया में बंद हो जाएगा. टेलीग्राम हैज ऑलरेडी बीन बैन इन सम कंट्री इंक्लूडिंग रशिया एंड ईरान. रशिया और ईरान में ऑलरेडी बंद हो चुका है और इंडिया में भी ये अनाउंस कर दिया गया कि ये बंद हो जाएगा. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द यूज़र टू every day shift from one platform to other, but nobody can do anything. So Telegram is also not very reliable and try to shift on some Indian app that is made by the Indian. There are several. You search it and find out and shift on that. Thank you viewers. Today this is all. If you like it, please share and subscribe. Thank you.